ओके, मई जून 22 है, ठीक है। पेपर 1 वेरिएंट 2 पहले करेंगे सेक्शन ए, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सेक्शन बी में से भी कोई एक सवाल अटेम्प्ट जरूर करें। स्टार्ट कर रहे हैं पहले सेक्शन ए से। द क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म पीस रेट। सही है। पीस रेट क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंसेंटिव सिस्टम है, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाला बताऊं कौन था? इसको इंट्रोड्यूस करने वाला था आपका FW टेलर, जिसने अपनी थ्योरी के अंदर पीस रेट को इंट्रोड्यूस किया था। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पीस रेट सिस्टम इज सच, पीस रेट सिस्टम इज सच in which workers are paid, in which workers are paid according to the output, according to the output they produce, they produce. For example, for example, for a single shirt, for a single shirt, if a worker is paid $10, if a worker is paid $10, so for 10 shirts, so for 10 shirts, he will be paid $20. Oh, sorry, $100. He will be paid $100. चलो आगे बढ़ते हैं। Explain two advantages to a business of using time-based payment method. Explain two advantages to a business of using a time-based payment method. यानी टाइम बेस्ड मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आर्ली रेट है, ठीक है। तो इसका पहला एडवांटेज लिखते हैं। द एडवांटेजेस आर that the workers are paid, that the workers are paid according to the number of hours they have worked. So if a worker is not working, there will be no payments, which will save cost, यानी सिनेरियो क्या है? जब वर्कर काम करेगा तभी पैसे देने हैं, जब काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं देने, कॉस्ट बचती है। द अदर एडवांटेज of the method is बिजनेस का अदर एक और एडवांटेज क्या हो सकता है? कॉस्ट सेविंग होती है, ठीक है, बात मानी। टाइम बेस का एक और एडवांटेज क्या हो सकता है? ये ना सेलर का टाइम स्टूडेंट कस्टमर का ऑर्डर टाइम बेस है ना, तो ऑर्डर हमारे कभी डिले नहीं होंगे, उससे हमारी रेपुटेशन भी खराब नहीं होगी। ऑर्डर्स कैसे डिले नहीं होंगे? नहीं ना, अगर वर्कर्स को टाइम पे चाहिए, टाइम पे काम करेंगे, तो फिर अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो अच्छी नहीं मिलेगी। बेटा टाइम बेस्ड पेमेंट है, जितना टाइम ज्यादा होगा उतने पैसे ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर तो ये इसका ड्रॉबैक है कि वर्कर्स डेलिबरेटली टाइम ज्यादा लगाएंगे, ठीक है, और स्लो काम करके उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, ठीक है। ये तो उसका ड्रॉबैक हो जाता है। लेट्स लुक एट द एडवांटेजेस। हमने पहला एडवांटेज तो लिख लिया, ठीक है। अच्छा चलो, बेसिक एडवांटेज, जब कुछ ना समझ में आए डाल दो, इजी टू कैलकुलेट। सीरियस कह रहा हूं मैं, से आपस की बात बता रहा हूँ। एग्जामिनर अक्सर ही हरकत करता है, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, कोई मसला नहीं है, जाने दो, डाल दो अगला एडवांटेज। द अदर एडवांटेज टू द बिजनेस
The other advantage to the business of using the method would be as it is easy to calculate, as it is easy to calculate, which will save time and resources of the business. हाँ नहीं, मैंने खुद से नहीं बताया, मैं सिर्फ पढ़ के बताया. ये रहा. It is easy for a business to calculate. It will save time and resources of the business. ठीक है, अगले पे आते हैं. Define the term franchise. आसान अल्फाज में, franchise is the use of business name, logo and trading method of an existing successful business, full stop. While being a franchise, लिख लो, while being a franchise, a business can be a sole trader, partnership, or a private limited company, सर क्या कर ठीक रहे है. पार्ट बी आ रहा है हमारे पास. Explain 2 advantages to a business of buying a franchise. अगर आप एक फ्रेंचाइज बिजनेस खरीद रहे हो तो उसके आपके पास एडवांटेजेस क्या होंगे. तो अगर मोटे मोटे एडवांटेजेस हम देखें तो रिस्क कम होगा, एस्टैब्लिश कस्टमर बेस होगी, प्लानिंग में, गाइडेंस में फ्रेंचाइजर हमें हेल्प करेगा, जो नेशनल लेवल की एडवर्टाइजमेंट है वो फ्रेंचाइजर खुद प्रोवाइड करेगा. ठीक है, ट्रेनिंग फ्रेंचाइजर खुद देगा. तो इसमें तो कोई भी हम 2 लिख देंगे. बिल्कुल जरूरी नहीं हर चीज करे, लेकिन हो सकती है. लिखते हैं द एडवांटेजेस of buying a franchise are that the risk would be less, as the business would already have an established customer base, therefore consumers will already know and be aware of the business, full stop. The other advantage is that the franchisor may provide guidance, comma, helps in planning and managing the business, therefore the new business owner might not face difficulties in managing the business.
अब इसके पेपर पैटर्न के अंदर क्या फर्क आया सेक्शन ए के, ये जो बस 5 मार्क वाला है ना, ये नीचे आ गया, और ये 2-3 मार्क वाला यानी क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर चले गया, 3 नीचे आ गया, बस ये फर्क आया, और कोई फर्क सेक्शन ए के अंदर नहीं है। ठीक है, पैटर्न ऑर्डर में फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ बिजनेस मैनेजर needs to understand the difference between capital expenditure and revenue expenditure. हाँ, इन दोनों ने ये दिया है, नहीं फेल नहीं होता, रिजल्ट अच्छा नहीं। जी जी बोलो। नहीं, मेरे पास मेरी स्पेशलिटी है, मेरे पास रिटेक वाला बच्चा आता है, सच कह रहा हूँ, मेरे पास डायरेक्ट सीधा बच्चा नहीं आता, लटका हुआ फेल हुआ पास करा दो, सच कह रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ, बताओ। सर आप बातें किए जा रहे हैं। हाँ तो बताओ बताओ क्या करना। मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं 2015 का पेपर सॉल्व कर रही थी, उसमें जो सही, सेक्शन बी था उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, वो 20 मार्क्स का है। मैं तो उसका आंसर कैसे लिखें, क्योंकि 20 मतलब 12 मार्क्स हमारे प्लस सिलेबस 80 से तो हट चुका है। वो तो मुझे पता है, मैं तो आपसे ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तो अभी सॉल्व कर रही हूँ ना पास्ट पेपर्स, तो नहीं, इसलिए। 20 मार्क्स की प्रैक्टिस करो ही ना आप, अभी फायदा ही नहीं है ना, 20 मार्क्स नहीं हमारे पैटर्न में नहीं, तो प्रैक्टिस मत करो। नहीं करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे अभी आपसे ना क्लास के बाद पेपर वो क्वेश्चन चेक करवाने हैं। ओके ओके। Explain why a business manager needs to understand the difference between capital expenditure and revenue expenditure. दोनों के definitions देंगे और explain कर देंगे। Capital expenditure is the expenditure. Capital expenditure is the expenditure done on the purchase. Capital expenditure is the expenditure done on the purchase of fixed assets, on the purchase of fixed assets, full stop, while it is recorded in the statement of financial position, in the statement of financial position, full stop, position, full stop, while revenue expenditure is the expenditure done on the day-to-day operating expenses, on the day-to-day operating expenses, operating expenses, while it is recorded in the income statement, while it is recorded in the income statement, full stop. Move on to the next paragraph. अब बताना है क्यों। It is important to differentiate, it is important to differentiate between revenue expenditure, between revenue expenditure and capital expenditure, and capital expenditure as if capital expenditure is treated as revenue expenditure, the expenses will rise, while the profits will be understated, while the profits will be understated, and the financial documents may not show
may not show the true and fair value of the business, the true and fair value of the business, full stop. Also, due to the inaccurate treatments, the financial documents may appear to be window dressed, due to which the business may face window dressed, due to which the business may face legal actions. The business may face legal action. यहाँ पर ये बात खत्म होती है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिफाइन द टर्म प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई ये उठ के जा चुका है A2 में, ये जा चुका है आपको कहां पर, A2 में जा चुका है, ठीक है, सही है। लेकिन फिर भी हम आंसर लिख लेते हैं, सही है, लिखते हैं, हाँ लिखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिख लो, काम है, हाँ अच्छा जो एक्सेल वाले वो लिख, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पेपर करीब आ रहे हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। इज द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज in quantity demand due to the change in price. Price elasticity of demand is the responsiveness change in quantity demand due to the change in price. बहुत दिल हो रहा है तो फॉर्मूला भी लिख दो, वरना इस डेफिनेशन पे ही 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो है, समझ वाली तो है, responsiveness change in quantity demand due to the change in प्राइस, सही है। सवाल बोल रहा है टू बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ नोइंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो देखो जब हमें पता होगी प्राइस इलास्टिसिटी तो हम इसके अंदर प्राइसिंग डिसीजंस में हमें हेल्प करेगा कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट की एक्चुअली प्राइस क्या रखनी है, ठीक है, प्राइस बढ़ानी है या प्राइस, दूसरा पार्ट बता रहा हूं, प्राइस बढ़ानी है या प्राइस कम करनी है। दूसरी बात, जब हमें नॉलेज होगी प्राइस इलास्टिसिटी की तो मुझे पता होगा कि जब मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो कस्टमर का रिएक्शन क्या आएगा, तो उसके हिसाब से मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकता हूं, उसके हिसाब से मैं प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये हट के आगे जा चुका है तो अब ये वाला पार्ट में नहीं लिखवा रहा, सेक्शन ए में क्लोज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग में, और हम अगली रिकॉर्डिंग में सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। अभी लिख रहे ये सेक्शन खत्म कर रहा हूं, वापस हम रिकॉर्डिंग में सेक्शन बी स्टार्ट करें।